तो जो आ जाएगा मतलब ट्रिगरिंग बन जाएगा. Everyone, so आज जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, this is Crossing the Chasm. Hello. Hello everyone. Hello everyone. So we are going to talk about this book. Especially आप में से जितने लोग business में हैं, I guess this is one of the top 5 books that you should have. So I recommend कि if you have not bought the book, just buy this book. The name is Crossing the Chasm. And no matter कितना भी बड़ा business आप करोगे, fundamentals you learn in this particular book is going to help you in that. हम 9 बजे शुरू करेंगे. I guess it's just like couple of minutes. We will start. Apart from that, अगर if you want anything specifically to be covered, please let me know in chat. And one more thing, if you have any questions, now पिछले कुछ sessions में मैंने क्या करा था, I was taking question in between. So from now on I won't be able to do it. अगर आपके कोई question है, you can ask at last जब मैं बोलूँगा to ask questions. Otherwise I won't be able to take your questions. So you can ask the question at very last. And now before we start, I just want you to know, I want you to tell, what do you think, like what is the most important when it comes to business? Like what are the things which are important to learn? This is something I want you to know. Just put in chat कि आपको क्या लगता है, if you really want to do business, what is the most important thing? Okay? Yeah. So one interesting thing that I recorded my first podcast today. So hope will soon will be released soon, and I hope you guys like it. So let's see. Now let's start with this book. Number one question is like crossing the chasm. The name title of the book is Chasm. Crossing the chasm. Like, do you know what chasm means? Chasm का मतलब क्या होता है? What does it mean? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? What does it mean by chasm? I think now you are able to chat. Just let me know in chat if you are able to chat or not. Somehow वो disable रह गया था. So if you know the meaning of chasm, just let me know what do you think. What is the meaning of chasm? Now chasm का मतलब होता है खाई. जैसे if you कोई भी बहुत बड़ी खाई होती है, गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा होता है, that's called as a chasm. Now you have to understand in business, there is a chasm that which you have to cross. Basically, how you can understand is, let's say कि एक पहाड़ है, right? And ये एक दूसरा पहाड़ है. Now think about it, you are here, and now you have to go to here. तो आपको ये जो chasm cross करना है, that is the challenge basically you have अपनी लाइफ में. आपको जो challenges आ रहे हैं अपने business के अंदर, जो challenges आ रहे हैं, that is you can say कि वो challenges एक chasm है, एक गड्ढा है जो आपको cross करना है. Now in every business you need to understand कि market में there are different kind of businesses and you have to cross that chasm. मतलब कि mass market में ऐसे stage पे पहुंचना जब ज्यादातर लोग आपकी product या service को accept करें. That is what we meant by crossing the chasm. There are companies, for example Apple हो गया, they are able to cross the chasm, but there are a lot of companies जो initially तो अच्छा करती है, but after a while they are not able to become successful. So why it happens, that is something we're going to learn today. So I hope you got the meaning of chasm, right?
Now I have a question for you. What is the population of India? क्या लगता है आपको? What is the population of India? Recent numbers. I just read it yesterday. That's around 141 crore. That's a not dollars. Sorry. Basically 141 crore. Now I was recently reading some data, and that was saying that how many businesses registered business are there in India. India में कितने registered business है? So the number was roughly around 15 lakh. The business number was around 15 lakh. 15 lakh registered business है इंडिया के अंदर. Now, out of the 15 lakh businesses, how many of these businesses are really big business? What do you think? There are around, don't quote me, मुझे exactly याद नहीं है, but around 30,000 companies which are listed companies. मतलब कि उन्होंने बाहर से पैसा उठाया है, फंडिंग उठाई है, and out of those around 6,000 companies which are publicly listed, मतलब कि स्टॉक मार्केट में है. बाकी there are very few business in India which are actually doing, just a second. Yeah, there are very few business, around less than 1 lakh businesses in India do 1 crore or plus sales a year. इंडिया के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सेल्स करने वाले जो बिजनेस का आंकड़ा है, दैट इज ओनली 1 CR. मतलब जस्ट इमेजिन दिस, आउट ऑफ 141 करोड़ people and out of 15 lakh companies, only few companies, only 1 lakh businesses which are doing that business of over 1 crore a year. So you need to understand that businesses जो होते हैं, you need to understand business works in phases. मतलब क्या? For example, you start your business. एक होता है कि you are from zero, then you start your business and you reach a certain level. In India में let's say कि you reach an average income which is around 10,000 rupees a month, which is like 120k. So let's say that's a first base. फिर अगर if you get a little higher, you get to around roughly 30 lakh. That is second base. Then you go further and then you reach a level where you are able to do 1 crore or more sales or 1 crore plus sales. Basically, think about business. You have to think a business like a human. Basically, when you are at zero, just like एक नया बच्चा जब पैदा होता है, first initially to get 120k, it takes time, it might take some effort. So basically when a kid born, usually you have to take care of that kid. आपको उस बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. You have to take care of that kid. So in that scenario, to get to first base, मतलब कि वो बच्चा 5 साल का होता है, तब तक you have to take care of that kid a lot. So in the same way, जब आपका business initially शुरू होता है, initially you have to take care of that business to get to a first level. Then once a business थोड़ा एक certain level पहुंचता है, let's say you hire a couple of people, then it becomes little easier, जैसे, but it's not able to take care of you. वो business आप उस business में free नहीं हो सकते. So that's the second base where you reach around 30 lakh level. And then when you are talking about over 1 crore business in India, you can reach a level जहाँ पे आपके पास let's say 5-10 employees है, and that business can take care of you. You are able to live the dream lifestyle you want to live. But you need to understand कि you cannot reach it directly from 0 to 18. मतलब जैसे 18 साल लगते हैं कि ह्यूमन को बड़ा होने में, मैच्योर होने में. In the same way, you cannot reach from 0 to 1 crore, बहुत जल्दी reach नहीं कर सकते. You have to go through that process. You cannot basically, आप एक adult को जन्म नहीं दे सकते, हमेशा बच्चा ही पैदा होता है. Adult cannot be born. So you need to understand from this analogy कि business आपको, you have to understand कि at what phase you are in. Are you at phase 1 कि जहाँ पे आपको 1,20,000 से कम कमा रहे हो?
आर यू एट फेज 2 जहाँ पे 30 लाख से ज्यादा, 30 लाख के अराउंड कर रहे हो, और आर यू इन बिटवीन 30 to 1 करोड़, और आप 1 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो? वेयर यू आर, you have to learn. Now, one of the things you need to understand ki whenever you start a business, what is the biggest challenge any business face? Just tell me, what is the biggest challenge any business have? Getting customers. आप में से जितने भी लोग बिजनेस में हैं, you might agree to this कि the biggest challenge in any business is getting customers. और आज जो हम बात करने वाले हैं वो उसी पे करेंगे कि how you can get your first customer जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करो, how you can get to a next stage of customer, and main thing which we want to talk about it is psychometrics. How many of you know this term psychometrics? आप में से कितने लोगों को पता है ये टर्म साइकोमेट्रिक्स? ये जो पूरे सेशंस हो रहे हैं, वन ऑफ द कॉमन थीम इज अबाउट साइकोलॉजी वी आर लर्निंग, एंड साइकोमेट्रिक्स इज जस्ट अ टेक्निकल नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर. सो दैट इज व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट. नाउ you need to understand, just a second. If you have the book, अगर आप या फिर क्रॉसिंग द chasm अगर लिखोगे, then you are still able to find similar kind of diagram. थोड़ा अच्छा है, तो अगर आप वो देखोगे तो you will realize कि he is dividing his customers, basically जो market है उसको 5 हिस्सों में divide करा है. Number 1 was innovators. Number 2 is early adopters. Number 3 was early majority. Number 4 was late majority. And last one was laggards. You can even say skeptics. So these are basically 5 categories of people in every industry जहाँ पे आप डील कर रहे हो. Now you have to understand कि ये पांचों जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, कौन सी चीजें हैं जो उनको अपील करती है, कौन सी चीजों से वो लोग दूर भागते हैं. अदरवाइज क्या होगा कि यू आर ट्राइंग टू पिच टू समबडी और वो बंदा आपकी बात शायद सुन के भी उसके दिमाग में वो चीज घुस ही नहीं रही है. लेट्स से कि यू आर गोइंग टू समबडी एंड आप उसको बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 10 ये कस्टमर है. शायद वो इस टाइप का इंसान है कि उसको जब उसको पता चला कि ऑलरेडी 10 कस्टमर आपके पास है, उस रीजन से शायद वो आपके पास से वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेगा. और लेट्स से कि आप कहीं और पे गए और आपने उस बंदे को बोला कि सर हमारी ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, मार्केट में बहुत ही कम लोगों के पास है, और अगर आप इसको यूज करोगे तो यू विल हैव द कंपेटिटिव एडवांटेज. नाउ हो सकता है कि उस वो जो इंसान है वो इंसान शायद उस चीज को एक्सेप्ट ही ना करे, एंड ही माइट रिजेक्ट यू. सो यू नीड टू लर्न व्हाट काइंड ऑफ राइट टेक्टिक टू यूज टू अ सर्टेन इंडिविजुअल. और आपके मार्केट में जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग करो, जब मार्केटिंग मैसेज करो, कहाँ पे उसको प्रेजेंट करना, you need to understand by understanding these 5 things. Now let's talk about all पांचों के बारे में बात करते हैं एक एक करके, and how to go with it. Number 1 was innovators. Just think about this. I'll give you a minute. आप अपने लाइफ के आसपास के लोगों को सोचो कि यू माइट हैव समबडी जो जिसको आप जानते हो, और मार्केट में लेट्स से कि यू माइट नो समबडी जो अगर मार्केट में कोई नया फोन आया ही विल ऑलवेज गो एंड बाय इट. या फिर कोई हो सकता है कि यू माइट नो समवन की आपके एरिया में या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहां पे कोई नया रेस्टोरेंट खुला, एंड दैट पर्सन इज ऑलवेज लाइक कि नया खुला है तो ही वांट्स टू गो देयर. यू माइट नो समबडी के यू नो व्हाटएवर दे आर डूइंग, अगर कुछ नया आता है
तो दे आर द फर्स्ट वन टू बाय इट. यू माइट हैव समवन अराउंड यू, जस्ट थिंक अबाउट इट. आप जस्ट थिंक अबाउट कि डू यू हैव एनीवन कि जो वो इंसान को नई चीजें यूज करना, नई चीजें लेना बहुत ही पसंद है. Yeah. So those people who are like initially जो कोई भी नई चीज आती है प्रोडक्ट मार्केट में, जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, those people are called as a innovators. Now you need to understand कि what characteristic, उन लोगों की क्या qualities होती है innovators के अंदर. Now innovators are the one जो नई चीजों को appreciate करते हैं. They are the people who appreciate new things. They are willing, basically उनका माइंड जो होता है, फ्रॉम माइंड दे आर ओपन फॉर न्यू थिंग्स. और वन मोर थिंग विच दे माइट नॉट इवन, दे आर नॉट परफेक्शनिस्ट. जब लोगों को पता है कि जब वो नई प्रोडक्ट लेते हैं, दे माइट प्रोडक्ट नॉट बी दैट मच ग्रेट. फॉर एग्जाम्पल, जिसने आईफोन का पहला वर्जन सबसे पहले दिन में लिया होगा, डू यू थिंक कि आईफोन अभी जो आया लेटेस्ट, उस कंपेयर में आईफोन 1 वाज वेरी वेरी बैड वर्जन. बेसिकली यू कैन नॉट कंपेयर. वो जो पहला आईफोन था कंपेयर टू आईफोन 15 वाज वेरी लेस फीचर्ड. वो शायद प्राइस पर वैल्यू उसका उतना नहीं था. स्टिल दिस पीपल हु हैव बॉट, लाइक मैंने अभी पढ़ा कि पहले दिन जब आई थिंक आईपॉड लॉन्च हुआ था, 3 लाख लोगों ने उसको लिया था. नाउ एट द मोमेंट आईफोन का जो मार्केट था वो बहुत बड़ा था, तो उसमें से भी जो 3 लाख लोग थे जो ऐसे थे, दे आर इनोवेटर्स. दोज आर द पीपल हु आर विलिंग टू टेक रिस्क. दोज आर द पीपल, उनको जो नई प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आएगी, दे आर विलिंग टू ट्राई दैट प्रोडक्ट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये दो चीजें तो है, दे ऑल्सो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर दिस थिंग, न्यू थिंग्स. एक और क्वालिटी होती है कि दे आर सर्चिंग फॉर न्यू थिंग्स. For example, you might have something which of your interest, like I was just having, जब आज हमने जो पॉडकास्ट किया, वो रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, देन माय फ्रेंड एंड द गाय हु विच जिसके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ, दोस गाइज वर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे अबाउट मूवीज, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि कौन सी मूवी नई आने वाली है, दे वर डिस्कसिंग अबाउट दैट. सो थिंक अबाउट इट कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मूवीज मार्केट है, तो दोस पीपल यू कैन से कि दे आर इनोवेटर्स, और ये पीपल हु आर अर्ली, जिनको शायद मार्केट में दूसरे लोगों को पता हो उससे जल्दी पता होता है. यू माइट हैव समवन, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, लेट्स से कि आप भी शायद कुछ ऐसे ब्लॉग्स देखते होंगे या फिर ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे जो शायद आपको, लेट्स से कि यू माइट बी इंटरेस्टेड इन एआई, चैट जीपीटी. तो आप, हो सकता है कि आप उसमें जो नया से नया फीचर आया है उसके बारे में सबसे ज्यादा अपडेटेड होते हो बिफोर मोस्ट पीपल नो अबाउट इट. और इट कुड बी कि लाइक फॉर समवन लाइक मी, अगर साइकोलॉजी में कोई नया रिसर्च आया होता है तो यूजुअली मेरे मेल में आई गॉट ईमेल्स ऑफ दैट एंड आई एम अपडेटेड अबाउट दैट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस जो भी है आपका, उस बारे में भी काफी लोग होंगे हु आर ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, कि दे आर लुकिंग, एक्टिवली लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, and they are where basically they are looking for something new. That are the positive of these people. Now what are the negative? Not negative, but एक और जो क्वालिटीज उनकी होती है कि दे वांट टू नो द ट्रूथ. अगर आपका प्रोडक्ट अभी फुल फ्लेज रेडी नहीं है और आप उतना शायद उनको जल्दी डिलीवर, उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते, देन टेल देम कि दिस इज समथिंग न्यू, आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, मुझे नहीं पता है क्या होगा, बट आई एम ट्राइंग दिस. you rather being truthful to those people rather than saying कि अगर आपके पास जो प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं है, instead of saying that you should think about saying the truth, because अगर आप उन लोगों से झूठ बोलोगे they will get turned off और वो शायद आपके साथ वो आगे डील नहीं करेंगे. Now then these are the people who are the ones कि जिनको आपकी, let's say कि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, बहुत ही ज्यादा उन लोगों को इंटरेस्ट होता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं. दे वांट टू नो योर डीपेस्ट सीक्रेट्स.
यू माइट फाइंड पीपल इन फ्यूचर कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो शायद आपको, लेट्स से कि अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो वो आपको ये पूछेंगे कि कौन से सर्वर पे कर रहे हो, उसका कितना कॉस्ट होता है, एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल्स दे वांट टू नो. देन the main thing is they are price sensitive. बिकॉज दे आर इनोवेटर्स, उनको पता है कि शायद वो उनको इतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. दे आर द पीपल हु आर यूजुअली प्राइस सेंसिटिव. आप में से काफी लोगों ने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में काफी एप्स देखी होंगी जिसके बाजू में लिखा होता है बेटा. बेटा वर्जन मतलब कि वो ऐप ही है, उसका मेन वर्जन लॉन्च करने से पहले लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती है, दे आर लॉन्चिंग अ वर्जन, अब बेटा वर्जन, जहां पे दे आर टेस्टिंग इट, अभी भी उसका प्रोसेस चल रहा है, वो ऐप अभी भी बिल्ड हो रही है, बट दे वांट कि पीपल कम एंड उनको थोड़ा फीडबैक दे. सो दे आर द पीपल हु आर प्राइस सेंसिटिव बिकॉज उनको पता है कि अभी शायद प्रोडक्ट उतना फुल फ्लेज नहीं है. सो दे आर द मोस्ट प्राइस सेंसिटिव अबाउट इट. So these are the qualities. Basically, they appreciate new things. They are actively searching for it. And these are the things that, like, they want truth. They want to know your secrets, and they are price sensitive. So जब भी आप, if you are coming towards somebody और आपको कोई मिल रहा है, so that's the reason initially जब भी, whenever you start your business, I will recommend you should not start with the highest price possibly can. You should always go for, like, unless until you have a lot of funds behind you, बहुत ज्यादा funding है, you should not go with the highest price you can charge initially. जब आपको भी पता नहीं, especially in service industry, इन लोगों को, if you screw up with this people won't mind. इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उनका काम उतना ज्यादा efficiently नहीं करोगे, because they know you are just starting out, you are trying something new, but you have to tell the truth. So that is one of the reasons I recommend कि अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, initially go for lower price, try and just get your first client, just try to, you know, build that relationship, try to start working. तो आपको पता चलेगा कि what kind of people they are and how you, आपको भी खुद का भी बारे में पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर सकते हो. So these are the things you need to understand. Now where to find those people? ये ऐसे लोगों को कहाँ पे ढूंढे? Where to find? Now when the, for this question you need to understand one thing, that कैसी जगह पे आप ढूंढ सकते हो. जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी नई इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है, दैट इज समथिंग यू शुड नो. आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है, सर्विस, उसकी नई इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है. देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर, लॉट ऑफ वेबसाइट जहाँ पे शायद हो सकता है कि इसकी नई इन्फॉर्मेशन आती हो. फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट देयर माइट बी लॉट ऑफ ब्लॉग्स जहाँ पे देयर माइट बी ब्लॉग्स जहाँ पे नई मूवीज की इन्फॉर्मेशन आती है. व्हाट आई नो, मुझे याद है कि जब मैं 9th में अपने हॉस्टल में था, फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट अ मैगजीन जिसका नाम था क्रिकेट सम्राट. नाउ वो जो मैगजीन थी वो उसमें छोटे से छोटे टूर्नामेंट जो इंडिया के अंदर हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती थी. सो आई कैन रियलाइज कि पीपल इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर जो इनोवेटर्स होंगे, जो नए लोग होंगे, हु वांट्स टू लर्न अबाउट समथिंग न्यू, दे आर रीडिंग दैट मैगजीन. सो यू कैन इवन थिंक अबाउट कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी नई इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है, वेयर न्यू इंफॉर्मेशन ऑफ योर इंडस्ट्री कम्स. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू थिंक, एंड देन यू हैव टू एडवर्टाइज इट देयर. आपको अपना मैसेज वहां पे पास ऑन करना है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि अगर आप मेन स्ट्रीम जैसे फेसबुक या फिर गूगल पे एडवर्टाइजिंग करोगे, योर कॉस्ट्स विल बी वेरी हाई. बिकॉज शायद हम आगे बात करेंगे कि कब जाके यू कैन गो इन टू मास मार्केटिंग, बट इवन यू माइट इवन एबल टू फाइंड सम पीपल जो इनका जैसे इंस्टाग्राम देख के पता चलेगा कि ही इज इनटू दिस थिंग्स और उसको नई चीजें ट्राई करना पसंद है. देन यू कैन गो एंड अप्रोच दोस काइंड ऑफ पीपल. बट यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये जो मार्केट का सेगमेंट होता है दैट इज अराउंड रफली 2.5 to 5%. मतलब हर 100 में से अगर 100 लोगों का मार्केट है तो उसमें से 2 से 5 लोग ही इस कैटेगरी में होते हैं. सो नंबर 1 क्वेश्चन विच यू शुड हैव इन योर माइंड इज कि वे, अगर आपका बिजनेस इनिशियली लेवल पे है,
एंड व्हेन आई से इनिशियल लेवल, उसका मतलब है कि आपके पास अभी कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं, आपका अभी जो प्रोडक्ट या सर्विस उतना एस्टैब्लिश नहीं है, यू आर जस्ट न्यूबी, यू आर जस्ट न्यू इन द मार्केट, देन दिस इज द स्ट्रेटेजी यू शुड यूज कि गो टू पीपल हु आर ओपन टू न्यू थिंग्स, जो एक्सपेरिमेंट करने को रेडी है, एंड हु आर विलिंग टू ट्राई, गिव यू अ चांस, गिव यू योर ट्राई। एंड इट कुड बी सिचुएशनल, काफी बार क्या होता है कि ड्यू टू सम सिचुएशंस ये हो जाता है। वन ऑफ द रीजंस आई टेल यू, मेरा जो करियर बना, वन ऑफ द रीजंस कि मेरा करियर जो अभी इज दैट माय वन ऑफ माय मेंटर, आई एबल टू रियलाइज दैट ही वाज द पर्सन हु इज लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स व्हेन यू पिच इन अ वे। तो जब मेरी पहले मीटिंग हुई थी, इवन दो आई एम डूइंग द सेम थिंग्स एवरीबडी एल्स इन द मार्केट, बट एक चीज जो मेरी एक्सपर्टीज थी, मैंने उनको बोला था कि सर आई नो अबाउट द कंज्यूमर साइकोलॉजी, आई बेटर देन एनी पीपल आई नो, एंड देन ही गिव मी अ ट्राई, and then I started my career and उसी तरीके से चीज वर्क करी, because he given me a try. Initially I'll tell you, पहले महीने में एक अच्छा रिजल्ट आया था, I got around 20, उन लोगों का एवरेज जो बैच साइज होता था प्रोग्राम के लिए वो 500 का होता था। फर्स्ट मंथ वेयर आई वाज देयर, वी आर एबल टू डू 2500 ऑफ बैच साइज, तो हम लोगों ने 2500 का बैच साइज किया था, दैट इज 5x। बट सेकेंड मंथ में ऐसा हुआ था, इवन आई स्क्रूड अप देयर वाज अ सीन कि हम लोगों ने एक ऐसा ईमेल कर दिया था जिसका टैगलाइन ऐसे था, जिसका सब्जेक्ट लाइन था क्या आप मूर्ख है, क्या आप मूर्ख है। दैट वाज द सब्जेक्ट लाइन ऑफ अ ईमेल, क्या आप मूर्ख है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट ऑफेंडेड बाय इट, काफी लोगों को ऑफेंड हो गए थे और काफी लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन भी करी थी। एंड नॉट ओनली दैट, उसी महीने में मुझे याद है हुआ था कि एक कैंपेन के अंदर मुझे 1800 का बजट रखना था पर डे, मैंने गलती से उसमें 18,000 का बजट रख दिया था। बट आई न्यू कि दिस गाइज ओके टू गिव मी अ शॉट, एज लॉन्ग एज उनको लग रहा है कि हाँ चीजें हो रही। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर डीलिंग विथ। ऐसे नहीं कह रहा कि जानबूझ के गलती करो, बट यू नो मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, इनिशियली यू नीड टू फाइंड इनोवेटर्स जो हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए जिनको गलतियां नहीं चाहिए होती है। यू डोंट वांट टू डील विद द पीपल इनिशियली। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ those are the innovators, then are the early adopters. The visionaries, basically ऐसे लोग जो visionaries होते हैं। Now the problem with, I'll tell you, अगर आप ऐसे भी इंसान के साथ काम करोगे who are into new things, उनको नई नई चीजें करना पसंद है, what will happen is कि when let's say, especially in service industry, even product में भी यही होगा, सर्विस में भी होगा। let's say you go, अब जैन में उन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय किया, they bought your product, okay? मार्च में let's say कुछ नया और नया आया, this people basically from a psychological point of view, they are dopamine driven people. जो अर्ली जो इनोवेटर्स होते हैं, दे आर डोपामिन, इनोवेटर्स आर मेजरली डोपामिन ड्रिवन पीपल। बेसिकली उनको नई चीजों करने का जो थ्रिल है वो पसंद होता है। सो इवन वंस दे स्टार्ट वर्क विथ यू, दे विल स्टार्ट वर्किंग विथ समवन एल्स, और वो शायद आपकी प्रोडक्ट सर्विस ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, डोंट टेक इट पर्सनली, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। Now second one was visionary. Now visionaries जो होते हैं, they usually don't care about your product or service. उन लोगों को ना आपके प्रोडक्ट से मतलब है ना आपकी सर्विस से मतलब है। These people are driven by dream. उनके दिमाग में एक सपना है, एंड अगर आप उनको कुछ ऐसा प्रॉमिस कर पाओ कि यू हैव समथिंग यूनिक, एंड यू हैव समथिंग यूनिक एंड यू आर एबल टू, अगर आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका इस्तेमाल करके दे आर एबल टू अचीव देयर ड्रीम, देन दे आर कॉल्ड एज अर्ली अडॉप्टर्स। मतलब कि ऐसे लोग, दे डोंट स्विच पीपल इजीली, उन लोगों को उतना जल्दी लोगों को चेंज नहीं करते। बट अगर एज लॉन्ग एज उनको लगे कि हाँ, जो पहले आपको इनोवेटर्स का समझना होगा, वो लोग प्रोडक्ट उससे, लेट्स से कि अगर वो आईफोन अभी 14 15 यूज कर रहा है,
और फ्यूचर में आईफोन 14 का कोई थोड़ा सा चेंज वर्जन आया, शायद वो उस पर स्विच हो जाए। दे वांट टू चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, उनको सिर्फ चेंज होना है। दिस पीपल विल चेंज इजीली, बट दे आर मोटिवेटेड बाय ड्रीम। तो जब ड्रीम की बात होती है तो यू नीड टू प्रॉमिस देम। व्हाट यू हैव टू डू, प्रॉमिस बिग इन अ रेल ऑफ कि आप उसको फुलफिल कर पाओ। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेन एवर यू माइट हैव समबडी कि जो सिर्फ सपनों की बातें करता है, हु आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे and what they are going to do. So basically this kind of people, you need to understand that these people, if you can promise them big, they will work with you. Now the main thing you need to understand, in लोगों के साथ you have to understand, don't over promise things जो आप डिलीवर ना कर पाओ, which you can't deliver. इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है कि हो सकता है कि यू माइट फाइंड पीपल, लेट्स से कि मेरे साथ हुआ था कि देयर वाज अ गाय, आई हैड लाइक 2 महीने पहले एक मीटिंग हुआ था, एंड उन लोगों का जो करंट मतलब जो ROAS था, दैट वाज अराउंड 1.5. नाउ दैट डूड इज लाइक, जब हमारी मीटिंग हुई पहली बार, मैंने उससे, ही वो जस्ट आस्क मी कैन यू डू दिस लाइक 5x. उसका अभी 1.5 ROAS है, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो था वो 1.5 है. उसने मुझे डायरेक्टली यही पूछा कि क्या तुम इसको 5 गुना कर सकते हो. I denied, I said no. But what happens is कि there are some people, इस टाइप के लोगों में आप जब बात करेंगे ना, you will find कि there are a lot of people who are delusional. तो delusional लोगों से आप कुछ नहीं कर सकते, but you have to talk in a manner, आपको उस तरीके से बात करनी पड़ेगी कि आप सपनों के, उनके सपने की हमेशा बात करते रहो. जब आप उनसे बात कर रहे हो, what is the end goal they are trying to reach, आप क्या आपकी वजह से आपके प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से वो गोल कैसे अचीव होगा, you have to keep talking about it. अदरवाइज ये जो लोग हैं वो टर्न ऑफ हो जाएंगे and they won't be working with you. Now ये जो विजनरीज होते हैं, विजनरीज जो होते हैं, दे बेसिकली थिंक फ्रॉम अ विंडो ऑफ फोमो. उन लोगों में फोमो एक बहुत बड़ी चीज होती है, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. फोमो मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड जो आया है, इफ दे डोंट पिक दैट, वो चला जाएगा, भले ट्रेंड नया नया क्यों ना हो. तो दैट इज अनदर थिंग. वन क्रूशियल थिंग इज कि दिस आर द पीपल हु आर नॉट प्राइस सेंसिटिव. They are not price sensitive, they are willing to pay you big amount, but as long as कि आप उन लोगों को promise कर पाओ कि whatever they want, उन लोगों का भी जो भी dream है वो achieve हो जाएगा, तभी जाके they will able to pay you. The only thing which you need to understand with working with this kind of people कि you have to make sure कि आपकी जो sales process हो रही है, कभी भी ऐसा कुछ उनको promise मत कर दो which you are not able to deliver it. Initially क्या होगा, you might feel tempted. आपको लगेगा कि you might feel कि आपने काफी ads ऐसी देखी होगी where people are promising things which they are not able to deliver. Let's say कि I am seeing a lot of ads. I won't take a name of the guy, but there is a guy from Bangalore and he's promising कि you can make a 1 crore 1 crore a year or something. He has a club, something called as 1 crore club. And now he is thinking कि उसमें लेट्स से 1000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं. टेक्निकली मैथमेटिकली 1000 लोग अगर एवरी इवेंट, हर 15 दिन में वो बंदा इवेंट करता है, तो साल के 24,000 लोगों को 1 करोड़ तक पहुंचाना, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सभी के लिए वो शायद पॉसिबल भी नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल फील टेम्प्टेड टू ओवर प्रॉमिस, जो शायद डिलीवर ना कर पाए. द प्रॉब्लम व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज whenever you see ads, जब भी स्पेशली जो आप में से जितने लोग कॉपी राइटर्स है, whenever you see ad which are hyper over promise, मतलब जो promise है बहुत हाई किया गया है, what it will does is it will attract lots of early adopters. It will attract lot of early adopters. Now what happens with early adopters, they came because they have the dream, उनका वो सपना है and they are willing to pay.
The problem is कि if you promise them too high of a thing and you are not able to deliver it, वो शायद वो they are the people जो शायद सबसे ज्यादा against हो जाएंगे. They will do the most negative marketing for you. So you need to understand कि don't over promise to a point जो आप deliver ना कर पाओ. That's the main thing you need to understand. Whenever you over promise to a level, बहुत अगर मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉमिस अगर आप ही कर रहे हो तो यू विल अट्रैक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अर्ली अडॉप्टर्स, विच इज समथिंग यू शुड नॉट डू. बट अर्ली अडॉप्टर्स जो है दे आर ऑल्सो ड्रिवन, they are driven by dopamine and cortisol. Basically ये दोनों इमोशंस दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ इमोशन. दे दोनों जो हार्मोन्स है उनके ब्रेन में रिलीज होते रहते हैं. व्हेन इट कम्स टू डोपामिन दे आर लुकिंग फॉर दैट गोल एंड दे ऑलवेज हैव दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट. FOMO. I was just reading I was just seeing Instagram before this call and मैंने एक पढ़ा, मैंने एक रील देखी थी. आई एम नॉट श्योर कितना सच है, बट इसमें क्या था कि यूएस के अंदर एक कंपनी है विच सेल्स लॉन्जरे. ना उन्होंने क्या करा, काइल जेनर जो है उनके जो 5 क्लोज दोस्त थे, क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो उतने शायद फेमस नहीं थे लाइक काइली, तो उन्होंने क्या करा, उन 5 को फ्री सैंपल्स दिए, उस पर्टिकुलर लॉन्जरे के फ्री सैंपल भेजे. व्हेन अकॉर्डिंग टू द रील, व्हेन शी सॉ दिस, she contacted, she felt missed out. उनको ऐसा लगा कि उनको वो शायद वो प्रोडक्ट नहीं मिली. So what she did, she contacted the company and asked कि I can endorse this for you, and she did it for free. तो बेसिकली क्या करा काइली जेनर ने, which she have around like over 100 million followers, as much as I know, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, but basically using this strategy they are able to get her for free. कि उन्होंने सामने से उनको कांटेक्ट करा and she said कि I can endorse your product. So yeah, so basically FOMO is a big emotion. So you need to understand जो early adopters होते हैं, they are driven by 2 primary emotions, cortisol and dopamine. Now after this 2, ये जो ये there are market को, there are 2 ways you can divide it. That's something called early market, then it's a main market, mainstream market. 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, mainstream market and late market. अर्ली मार्केट मतलब उसमें 10 से 15% जो मार्केट है वो अर्ली मार्केट होता है. मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 70 to 75% मार्केट इज दिस, एंड इवन 10 to 15% जो होता है वो लेट मार्केट होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अर्ली अडॉप्टर्स या फिर इनोवेटर्स जो होते हैं वो मार्केट में हर 100 में से 15 लोग ही होते हैं. दे विल बाय योर प्रोडक्ट, दे डोंट केयर कि आपने किसी और के साथ काम करा है कि नहीं करा है. दिस इज वन डिस्टिंक्शन यू हैव टू मेक. जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं दे वोंट केयर कि आपने किसी और के साथ काम करा है कि नहीं करा. दे अगर आप इनोवेटर्स जो है उनके लिए तो अगर आपका नया प्रोडक्ट ही है दे विल वर्क विथ यू. अर्ली अडॉप्टर्स में अगर आप कुछ नया प्रॉमिस करोगे जो किसी ने यूज नहीं करा है, स्टिल दे विल वर्क विथ यू. दे डोंट केयर कि आपने किसी और के साथ काम करा है कि नहीं करा है. आप में से जितने भी लोग सेल्स में हैं, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस कि आप जब भी किसी से बात करते हो, there are people who ask you कि आपने और किसके साथ काम किया है. Now whenever a person asks you this, you need to understand they are not part of the early adopters or innovators. वो ऐसे लोग नहीं हैं who are part of that. So if you are just starting out, अगर आपके पास testimonial नहीं है, I won't recommend to try to close people who are not in early, you are initially first couple of clients और 2-3 clients ऐसे होने चाहिए who are in the early market, who are there to look for it, because those are the right kind of people for you.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो था, ये दो टाइप के लोग थे, वो अर्ली मार्केट थे. Now let's talk about mainstream market, which is early majority. Now early majority मतलब कि ऐसा market which is a very huge in size, but उन लोगों में भी काफी चीजें जो आपको देखनी पड़े. Just a second. Now you need to understand जो chasm था, हमने जैसे बात करी, basically ये गड्ढा है and you have to reach other side. Though chasm, इस book के according the chasm is to going from early market to late mainstream market, because यही phase है जहाँ पे actual पैसा बनेगा. Otherwise you won't be able to create a sustainable business unless until you are able to go in mainstream market. Early majority होगा क्या कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, you might even able to find some people who are willing to work with you, जो आपके साथ काम करने को रेडी है, but after a while you won't be able to find much people. You have to learn कि किस तरीके से mainstream market में जाके you can tap into the mainstream market. Now the first one was early majority. They are also called as a pragmatist. Now the thing is, you cannot define the pragmatist as much. उनको इतना कुछ आप define नहीं कर सकते. The good thing about pragmatist is कि अगर आप इस तरीके का customer अगर आपको एक बार मिल जाए, what happens is if you can find this kind of customer, they are hard to get. Basically, understand they are hard to get, right? But once you get them, they are loyal. Once you get them, they are loyal to you. अगर आप एक बार उनके साथ काम करा, एक बार अगर उन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज करा, they will use it for long time, and that's where actual money comes from. So you need to understand. It's basically like if you talk about dating scenario, there are few girls you want to date. उसमें से you can say that the girl who is hardest to get, usually she is a marriage material basically. So that is something that once she's hard to get, but once you get her, she'll be loyal with you forever. So that is something you need to understand even with the customers, that if they are hard to get, अगर वो लोग easy नहीं है, they are hard to. Now why they are hard to get? I'll tell you. You क्या इन लोगों को convince करने के लिए what you need? Now you need to understand कि these people they care about कि किससे buy कर रहे हैं, from whom they are buying. Basically अगर आप individual हो तो आपकी reputation, they care about your reputation. They do care about कि आपने और किससे साथ काम किया है, with whom you have work, social proof. इन लोगों के लिए रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस एंड टेस्टिमोनियल्स. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज कि एक प्रैग्मेटिस्ट जो इंसान होगा या फिर जो अर्ली मेजोरिटी में जो इंसान होगा, दे वोंट वर्क विथ यू अनलेस अनटिल कि दो लोग जो जिनको वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ काम नहीं करा है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, लेट्स से कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन. जब मोबाइल फोन आया होगा तो व्हाट वुड हैव हैपेंड कि कुछ लोगों ने इनिशियली पहले ही दिन उसको खरीदा होगा. देयर आर सम अदर पीपल जिन्होंने उनको लगा कि उनकी लाइफ उनसे बेहतर होगी, उन्होंने खरीदा होगा.
आफ्टर अ वाइल व्हाट विल हैपन इज कि दे आर एबल टू टैप इन द मार्केट कि अगर मेरे दो दोस्तों के पास फोन है देन आई फील लेफ्ट आउट एंड आई विल बाय इट. सो फॉर प्रैग्मेटिस्ट बेसिकली उनके आसपास के दो लोगों, जिन दो लोगों को पर्सनली जानते हैं, अगर उन्होंने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करा है then they are able to trust you for that. I'll tell you one more thing. After almost 5 years, अभी I am at a stage right now कि मैं जितने भी लोगों से अभी अपने सर्विसेज के लिए बात करता हूँ, what happens is कि I am able to say कि you know this person, I have worked with you. So what happens is कि that is one of the reasons basically I just crossed the chasm last year. लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ था कि आई रियलाइज कि वो जो रेजिस्टेंस था लोगों का दैट गॉट लेसन्ड. अदरवाइज पहले क्या होता था कि आई वाज नॉट एबल टू क्लोज दैट मच ऑफ डील्स व्हिच आई एम एबल टू कन्वर्ट नाउ बिकॉज नाउ आई एम एबल टू शो कि इस बंदे के साथ मैंने काम करा है टू whom you know. So यहाँ तक द थिंग इज कि दिस पीपल वोंट वर्क विथ यू अनलेस अंटिल यू हैव द रेफरेंस. नाउ द थिंग इज और उनको ऐसे लोगों के रेफरेंस चाहिए जो उनके जैसे हैं. सो एंड द प्रॉब्लम इज कि दे वोंट, अगर आप उनके साथ काम ही नहीं करते तो हाउ यू कैन गेट द टेस्टिमोनियल्स. सो दैट्स द अल्टीमेट कैच 22 that you have to face basically. So that's one of the reasons I suggested कि you need to find people who are willing to experiment, innovators या early adopters. तो उससे क्या होगा कि let's say once you work with them, you are able to create some result, you are able to show some these people कि how you can help them और आपके पास वो testimonials built होंगे. Otherwise if you don't have any testimonials, these people won't work with you. ये लोग जो है वो आपके साथ काम नहीं करेंगे. Now one more characteristic of these people like to see competition of this. बेसिकली अगर आपका कोई, आपने इन लोगों को अगर ये आपने ऐसे बोला कि यू डोंट हैव एनी कंपटीशन, they might be more skeptical, they won't buy from you. वो शायद आपके साथ उतना बाय नहीं करेंगे. The one more thing is they are reasonably price sensitive. मतलब कि वो शायद उतना बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है. प्राइस मैटर करता है, बट इफ यू आर एबल, if you say you are providing value for money, then they are open for it, they will pay you the amount you want. And usually what happens with these people जो pragmatist होते हैं, they are usually looking to buy from somebody who is market leaders, who are market leaders, जिनके पास ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है. Why? Because just imagine this, अगर कोई बड़ी कंपनी के साथ अगर आप काम करना चाहते हो, working with you who is just a freelancer is a risk, or working with you somebody who is just a new person, that's a risk that they are taking. Now if they are taking that risk, बड़ी कंपनीज में होता ये है कि जो मार्केटिंग का मैनेजर होता है या फिर जो इंसान होता है, ही इज नॉट द अल्टीमेट डिसीजन मेकर. तो होता ये है कि ही विल, अगर आपने कुछ काम बिगाड़ा तो ही विल सीम बैड इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स. जितने भी लोग होंगे उनके सामने वो बुरा दिखेगा. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दिस पीपल do not do business with you unless until you have worked with person जिनको वो ऑलरेडी जानते हैं. I'll tell you one thing. Recently I was just planning कि now I want to expand my business और मुझे कुछ चीजें करनी है. I want to go into some big companies just like let's say Amazon, Zomato. I want to get them as a client. मुझे कुछ करना था. So I was thinking about what I can do. So one of the strategies which I thought that what I can do, I can go and do some certification को in VC. VC मतलब कि venture capital का कोई certification course कर लूँ, and then I go to Bangalore or some companies and I ask them, okay, I have done this, I know this, and I want to do a free internship. The plan is कि once I get into that circle, now अभी मेरी कंपनी को वो chasm cross करवाना, it is very hard for me because मुझे किसी 4 लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. I have to spend more money
एन एफर्ट, बट इंस्टेड अगर मैं उस इंडिविजुअल के साथ एक बार टच में आ गया हु आर इन्वेस्टिंग इन 10 कंपनीज या फिर 100 कंपनीज, व्हाट हैपेंस इज कि मैं ऐसे इंडिविजुअल वो क्रॉसम जो chasm है, वो जो गड्ढा है वो क्रॉस कर लिया. नाउ आई हैव बिल्ट द ट्रस्ट. Once, because they know that they can trust me, I can get them as a client easily because now I'm directly in touch with the decision maker, the owner of the company. So you need to think कि कई बार क्या होता है, if you are in business, for me now, even more than product or service, I kind of realize कि if I can cross the chasm, product will easily cross it. So you need to understand कि शायद you need to understand there is 3 things in business which are important: land, labor and capital. Okay, capital मतलब के money, labor मतलब के skill. इन दोनों से, स्किल से आप अपना जो स्किल है उससे एक chasm क्रॉस करना इज वेरी हार्ड. You can either use money. Money, basically how you can use money, you can use money to bring people to endorse you. अगर आपके पास पैसा है, if you have enough funding, what you can do, go out there and किसी को हायर कर लो, कोई सेलिब्रिटी को, and they will endorse your product. So that's a giving you social proof जो आपको हेल्प करेगा ये क्रॉस करने में. बट मेन थिंग इज लैंड. लैंड मतलब कि आपका लैंड इन द अवर सेंस इज हु यू नो. तो अगर आप किसी इंसान को जानते हो, what are your contacts that will help you to cross the chasm. So yeah, so main thing is कि you need to understand कि जो भी ये जो market leaders है, you need to first work with people and you have to show references. So you have to accept this reality कि initially you have to first go with the lower price, फिर एक reasonably price you can increase the price, then you might have to decrease the price, but initially you have to work with people who are in the early markets who are looking for opportunities. आपको बड़े अच्छे clients initially नहीं मिलेंगे. It is not practically possible. और जितने भी आप में से शायद हो सकता है कि you might be able to see the story and reels and everything जहाँ पे लोग promise कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, you can find clients initially. I mean, trust me, they are lying to you. Because think about this. Now, what kind of emotion these people are driven from? जो एक होता है fear. Basically, fear, you can say, that's also cortisol, stress hormone. Another is oxytocin. Basically, they are likable people, but they won't take that risk अगर आप इनके ऐसे किसी इंसान के साथ काम नहीं कर रहा है जिनको वो जानते हैं. But now, one thing you need to understand कि जब भी आप ऐसे लोगों के साथ काम करो जिनके साथ you need to be patient. You have to have patience. Now, I'll give you some practical tips. अगर इस टाइप के इंसानों को अगर आपको एज अ क्लाइंट लेना है तो what you can do, जिस भी इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स में जाना चालू करो. स्पेसिफिक इवेंट्स. You can even go, you can do your paid PR जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म को वो लोग ट्रस्ट करते हैं. तो you can use PR. You need to work with other, you need to find people जो उनकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जिनके साथ आप इजीली काम कर पाओ. बेसिकली you need to understand कि from early market, basically early market से mainstream market, there is only couple of ways you can cross this chasm. वो ट्रस्ट डेवलप करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं. आप में से जितने लोगों ने पिच एनीथिंग का सेशन देखा हो, you can buy the book. उस सेशन में हमने शायद, मुझे याद नहीं है कि we talked about this or not, but he is talking about 2 things which you can do in order to bring trust in any environment. Either you can use wealth or you can be a celebrity.
Now, wealth and celebrity. Let's talk about celebrity first. Celebrity doesn't have to be कि आपको you need to be like Salman Khan, but you have to be known. आपको लोग जानने चाहिए, आप पे भरोसा करना चाहिए. And even wealth मतलब कि you should have enough money to spend on PR. तो ये दो तरीके हैं जिसका यूज करके you can cross the chasm. Now I'll tell you one more example. I'll tell you. आप जिस एनवायरमेंट में हो वो मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग यहाँ पे है who are here. आप लोग इस वीडियो में इस तरीके इसलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं whenever we are in the office, I was sharing something with you and you feel like I am somewhat of authority figure. You kind of know कि I know this stuff, that's why you are here. I'll tell you, you know, आप में से कोई भी इंसान मेरे फायदे के लिए यहाँ पे नहीं है. You are all here to learn something जिससे आपका फायदा होगा, right? So then there's nothing wrong in it. उसमें कुछ गलत नहीं है, but you need to understand you have to make other people feel the similar way. अगर दूसरे इंसान को अगर आप similar way में feel करवाओगे, then you are able to cross the chasm. So this is the something you need to understand. Celebrity बनना मतलब कि you can do PR activities, you can get known. I did one activity where I authored a book with a guy. You can even आजकल अगर देखो तो there are a lot of paid podcasts भी होते हैं. You can go on that. Basically, you can get in front of people where people get to trust you. Now, I'll tell you about the guy. There's a guy named Himanshu Agarwal. उस बंदे की ads हो सकता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी. One of the things that dude did, which is very smart, was once he started running his ads, उस बंदे ने 4-5 लोगों के साथ पॉडकास्ट कर दिया और वो उसका जो टाइम फ्रेम था दैट वाज अराउंड अ मंथ. तो हो क्या रहा है कि नाउ पीपल आर सीइंग हिम विद 5 बिग इन्फ्लुएंसर्स, तो उसकी वजह से वो ट्रस्ट आ रहा है एंड ही इज एबल टू गेट इनटू द मास मार्केट. So otherwise you will not be able to do it. You have to learn how to cross this chasm. Basically you have to learn how to go from early market to major market. होगा क्या, otherwise क्या होगा कि let's say अगर आपने 5 साल तक भी काम किया, you might able to find people who are willing to work without seeing the testimonials, without asking you the testimonial. बट वो लोग जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी चले जाएंगे. अगर आप अगर आपका ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे कंसिस्टेंटली यू कैन हेल्ड होल्ड अ क्लाइंट, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या फिर ऐसी कोई सर्विस जहाँ पे रिकरिंग पेमेंट आपको मिलता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू कैन फाइंड प्रैग्मेटिस्ट रादर देन अर्ली अडॉप्टर्स और बेसिकली अर्ली मार्केट के लोग, क्योंकि वो लोग आपको लॉन्ग टर्म में दे वोंट बी सस्टेनेबल. एंड one of the most important thing is reputation. According to Warren Buffett, this is the most important thing, even more than money, which is reputation. Once you are in an industry, आपको अपना reputation एक बार अच्छा बनाना है, and you have to make sure you are maintaining it. Reputation in the sense कि अगर आप अच्छा quality आपका जो product या service जो भी है deliver कर रहे हो, you have to provide it no matter what. For example, I'll tell you. Recently what happened was one of the clients we took on और एक महीने बाद हम लोगों को मजा नहीं आया. उन लोगों को we promise कि if we don't work together वो अच्छा नहीं रहेगा, then we will refund you. So what happened was कि now doing that refund शायद उस बंदे को फर्क भी नहीं पड़ेगा, they won't even consider that. But what will happen is कि शायद हमारा काम हमने उनको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया शायद, but that won't go negative. वो शायद हमारी रेपुटेशन जो है that won't screw it. अगर उस बंदे या बंदी के साथ फ्यूचर में अगर कोई बात करेगा, at least the message will be there that these guys are honest, and that's a way we are building our business. Ki one of the things I want about myself is this guy is honest, this guy is smart and honest, but main thing is honest, pehli cheez. So this is something you have to decide ki how you want to be known in your industry, aapki kya reputation hai, and you have to manage it as much as possible. That is one of the reasons I was आप में से काफी लोग एंड्रू टेट को जानते होंगे. I was watching one of his course called Hustler University. Now in his course he is talking about कि you know speed is everything in business. Speed is everything in the sense कि he is talking about कि वो जब 20 साल के थे, when he was 20 he started a advertising agency, and what he जो मार्केट में जिस एड का $20,000 होता था वहां पे दे स्टार्ट टू प्रॉमिस कि वो दे कैन गेट द सेम एड फॉर $15,000, मतलब ना मार्केट में सबसे कम.
Now they were not profitable, but what they were doing, वो क्या कर रहे थे कि पहले क्लाइंट से 15,000 लिए, दूसरा क्लाइंट ढूंढा, दूसरे से 15,000 लिए और 20,000 का यूज करके दे रन एन एड फॉर द फर्स्ट क्लाइंट, फिर दूसरे के लिए तीसरे का क्लाइंट ढूंढ रहे थे, तीसरे के लिए चौथे का. सो बेसिकली व्हाट दे वर डूइंग इज कि दूसरे क्लाइंट, तो बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल एंड ही वाज शेयरिंग के अराउंड 2 या 3 साल तक वो चला था, एंड देन he attracted lot of lawsuits which could be there, but what I'm sharing is कि potentially that could have that would have उनकी जो reputation है वो सारी स्क्रू अप हो गई होगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और उस बंदे को उसी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म पे काम करना होता, वो शायद वो चीज काम नहीं करती. एंड देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस. नाउ आई एग्री विद लॉट ऑफ स्टफ विद व्हाट एंड्रू टेट सेज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए. इफ यू आर, लेट्स से कि इफ यू आर लिविंग इन सर्टेन सिटी, यू डोंट वांट टू स्क्रू अप योर रेपुटेशन इन लॉन्ग रन, राइट? सो मेक श्योर, इवन देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस की लोग कहते हैं कि इट्स ओके टू स्क्रू पीपल ओवर, व्हिच इज नॉट. यू हैव टू मेक श्योर कि जो प्रॉमिस करा है यू आर डिलीवरिंग इट, यू आर फुलफिलिंग इट, तो लॉन्ग टर्म में दैट विल गिव यू अ एडेड एडवांटेज. तो वो एडवांटेज आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा. What's the time? Okay. Now let's talk about people who are late majority. Which are conservative. Basically conservative ऐसे लोग होते हैं, they are like 33% of the any population, any market are conservative. Now conservatives ऐसे लोग होते हैं, basically one of the qualities of the conservative is कि उन लोगों को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से कुछ लेना देना नहीं होता है. आपके आसपास भी शायद ऐसे लोग होंगे जो अभी भी ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे वेबसाइट होने से फायदा हो सकता है पर उनकी वेबसाइट नहीं. So what this people want is कि उन लोगों को प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहिए होती है. They want कि कोई भी ट्रेंड जो है एकदम बहुत ठंडा हो जाए and they will buy it last. अगर लेट्स से कि सबसे लास्ट में वो लोग लेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को एज ए कमोडिटी ट्रीट करेंगे. दिस पीपल आर एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव. These people are extremely price sensitive and they just want to treat you as a commodity. And they will buy when they see at least 10 people, अपने आसपास के 10 ऐसे लोग. अर्ली मेजोरिटी में क्या होता था कि उन लोगों को 2 लोगों को जानते हैं जिनके साथ आपने काम करा, देयर ओके. दिस पीपल वांट 10 पीपल. दिस आर 10 पीपल. अगर वो 10 लोगों को जानते हैं जिन्होंने आपके साथ काम करा है, दे नीड मोर प्रूफ, ज्यादा टेस्टिमोनियल्स आपको दिखाने पड़ेंगे टू कन्विंस दिस काइंड ऑफ पीपल. सो दिस आर द क्वालिटीज ऑफ दिस. And these people also want the whole solution. Basically, let's say कि you could be a person. I'll tell you example of digital marketing जो हम लोग करते हैं. You can have like let's say Facebook ad agency. Okay, you can have a website agency. You can have a Google ad agency. Okay, वो कोई भी separate agency अगर आपकी है तो this kind of people you won't be able to close, क्योंकि इन लोगों को solution कैसे चाहिए होता है कि वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफ ऑल. इन सबको एक ही सोल्यूशन चाहिए होता है सारी प्रॉब्लम्स का. सो these are the people. Basically I won't recommend you are trying to go after those, but mainly, and इसके बाद जो लास्ट के लोग होते हैं, they are called as a
laggards और skeptics? skeptics मतलब कि ऐसे लोग, ये लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तब तक नहीं लेंगे जब तक लेना इतना जरूरी ना पड़ जाए कि उनके बिना वो रह ही नहीं सकते, दे कैंट लिव विदाउट इट। तभी बेसिकली एग्जांपल अगर समझे तो अगर आप जाओ, आज भी डीवीडी, जो पुराने जमाने में जो डीवीडी आती थी, आज भी उसका मार्केट काफी बड़ा है, अच्छा खासा मार्केट है। आज भी वो जो कीपैड वाले फोन आते हैं उसका मार्केट काफी अच्छा है। देर आर स्टिल पीपल हु आर बाइंग ब्लैकबेरी, मतलब देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बाइंग नोकिया फोन्स। बेसिकली ऐसे लोग जिनके लिए चेंज करना इज द लास्ट ऑप्शन, दिस आर द पीपल यू कैन कॉल एज अ स्केप्टिक्स। उन लोगों के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि मेनली आई टेल यू, मेजॉरिटी आप में से जितने भी लोग हैं, योर गोल शुड बी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अर्ली मार्केट टू मेन स्ट्रीम मार्केट। यही आपका गोल होना चाहिए, बिकॉज वंस let's say even in a service industry, if you go to main market, you are easily able to crack 1 CR, वहां तक तो बिजनेस कर सकते हो, यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट गोइंग बियॉन्ड इट, उसके पार जाना इट्स नॉट इवन नीडेड, डिपेंडिंग ऑन वेरिंग इंडस्ट्री। बट इन इंडिया आई डोंट थिंक कि आप सिर्फ अर्ली मार्केट से 1 करोड़ क्रैक कर सकते हो। इफ यू वांट टू डू अ 8 फिगर बिजनेस, यू नीड टू लर्न हाउ टू डू दिस। एंड आई वाज हियरिंग समबडी, और उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि इफ यू कैन नॉट कन्वर्ट कोल्ड मार्केट, बेसिकली जो कोल्ड मार्केट है, जो उन लोगों को अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है, यू डोंट हैव अ रियल बिजनेस, यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन अगर आप एक रियल बिजनेसमैन नहीं हो। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये 5 थे। आई स्टिल रिकमेंड यू रीड दिस बुक because this is little heavy to understand, so I still recommend that you read. Let's talk about इसको थोड़ा सा simplify करने की कोशिश करते हैं। I'll tell you कि how you can judge a person as an individual, आप कैसे उसको judge कर सकते हो। तो number 1 was innovator, early adopter, early majority, late majority, and 5 laggards. Now I want to show, आप में से जितने लोगों ने गेटिंग मोर वाला सेशन अटेंड किया था, I've shared about pace system. Now in that system I'm giving you a rough idea, not this is not 100% accurate, but usually these people are innovators, are action people, and this both are action. This early majority are usually practical, these are social, and these are E. Now this is not 100% accurate for the most part, but you can have a rough idea. Usually this is what even I have found. So you can even give it a try. Jo zyada, if somebody is willing to take a lot of action, he is usually early adopter or innovator. So yep. Amending time. So yep. So this is basically it. And one more thing which I wanted to share before that, I want to share which book we're going to talk about next. It is personality psychology. मेरा इसका cover जो था वो फट गया है. So basically it's personality psychology by Dr. David Buss. ये Indian version है. That is the book we're going to talk about next. Now, what you should do in any market, whenever you go into any market, ये चीज हमेशा बात होती है, but nobody really understand this. This is very, very fundamental. Niche. Initially try to go जितना narrow हो सके, जितना narrow market cover कर सको, that will be the best strategy in any industries. For example, whenever I think about target market, whenever I see people and whenever I ask what is your target market,
I get the chat GPT wale answers. The problem is if you write ki I want to target to a certain audience, what should be my target audience, chat GPT will give you some answers. Chat GPT wale answers nahi chahiye. You need to be very precise. You need to be very precise in terms of whom you are targeting. And धीरे धीरे जैसे जैसे customers मिल रहे हैं, जैसे जैसे customers बढ़ रहे हैं, then you are able to basically expand it. इस book में जो strategy कही गई है, that is called as D-Day strategy. Now what is D-Day strategy? For example, let's say this is a country, okay, and you have an army. आपके पास एक army है, where you have to attack the country. Now one strategy is कि आप पूरी country के चारों तरफ जाने की कोशिश करो. Now what you are doing is you are आपके जितने resources हैं ना आपको spread out कर रहे हैं. So ideally what you should do कि this is what even Genghis Khan जो था उन्होंने यही करा था. What he used to do कि he used to go a certain टापू, एक certain area choose करते थे. He used to put all the force there. He used to win this particular portion. Then he came here. फिर वो इतना करेंगे. Then he won here. Then he came here. He won here. फिर ये इतना. And basically then he go and won everything. So you need to figure out कि आपका जितना target market है initially जितना कम जितना छोटा होगा, that is going to be very very useful. So try to be as precise as possible. जितना हो सके. जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा शेयर करता हूँ लास्ट मिनट होटल्स वाले का, कि होटल इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही लोगों को चुना था who are willing to buy, who just want to buy at last minute. जो लास्ट उनका बिहेवियर ऐसा होगा जो लास्ट मिनट बायर्स है वैसा. So yeah, so that is it. Basically that's it for the call today. Next week we're going to talk about personality psychology. Now if you have any question you can ask me in the group, because मेरा गला जो है उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, so I'm not continuing it and I won't be able to answer the questions now. But if you have any questions, ask me in the group or ask me personally जहाँ से आपको link मिला. So yeah, thank you.